Okay, so I think we were working on the concept of numbers. In the last class, we were talking about numbers and all, and then we talked about the sequence of numbers. We just have to identify the pattern. We are basically working on the concept of numbers where we want to get the pattern. This is a topic under logical reasoning. What is the next kind of a question that could be asked under this topic? What we have done, some numbers has been given. We have to identify the pattern and get the next number. What is the other kind of a question that could be asked is there on the screen. Given a sequence, you have to get the wrong number among the sequence. Means there is a one term in the sequence which is not satisfying the pattern. We have to just point that number, nothing else. Okay, just think about it. Just try to see. यहाँ पर कुछ एक सीक्वेंस दिया है, उसमें से एक नंबर ऐसा है जो पैटर्न को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. दैट नंबर कुड बी 12, 19, 42 और 32. जस्ट ट्राई टू सी which number is not satisfying that pattern. Try to analyze that data. I think तब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे. 3, 12, 8, 19, 13, 32, 18, 42, 23, 52. Okay, very good. 19, right? So the correct answer is 19. Let's see why 19 is not satisfying the pattern. First of all, we have to get the pattern. ये question थोड़े difficult होता है because एक ऐसा number है जो pattern को satisfy नहीं करता. We have to get that number. First thing that we can observe over here is if I see this 3 to 8 is nothing but plus 5. 8, 13 is again plus 5. This 13 to 18 is also plus 5 and this is also plus 5. So I found this is a correct sequence, so that was not a problem. The remaining number I try to write. Okay, it could be 12, 18, 32, 42 and 52. Very good identified. This number, if we see the pattern, this number must be 22. Then the pattern is good, right? So it is a difference of 10. So the wrong number among this is this one, 19. Right? So option 2 is the right answer. Is it fine? Everybody is able to get how the question was asked. We have to get a number which is not satisfying the pattern. Okay. And one more thing I just want to repeat. Today we'll be having session till 3:30. From 3:30 to 4 you have to give the test. The test would be based on the similar question that we have done in the session today and yesterday or day before yesterday. Right? Okay. Let me just give you the next question. Okay. Try to see this and let me know which number is wrong among us. Very good, 52. I think it is easy to identify, but initially just I want you to understand how we are getting it, right? Because 50 is not satisfying the pattern. 31, 41, 51 should be the case, right? It should be 51, 61 and 71. So the correct option is 52, right? So that this one is easy. This one is easy, right? Yep. Okay. Let me give you the next one. Now it is a bit tricky. Try to get this. You have to find out a number which is not satisfying the pattern. And also one more thing, if any one of you is unable to get it, please let me know in the chat box how I am writing the answers, right? Okay. Now this time Zenith feels it is 5 and other student felt it is 73.
Okay, let's see. Okay, okay. Somebody again, Zenith again is thinking about 5. Anyone else just try to identify the pattern. You know? Just try to play with the numbers given. Okay, Atharva feels it is 39. Okay, plus 9 pattern. Okay, Trishula is thinking about plus 9 pattern. Okay. Let me just talk about what Trishula is trying to tell. Okay, so it is nothing but plus 9 pattern is like 10, 19, 39, and 73. Right, so I'm just taking the alternative number 5, 12, 26, 50. Right, I have taken the alternative numbers. The first thing that I observe is over here the sum is of plus 7 plus 14, then it is plus 28. So I think over here there is no problem. Right, this 5, 12, 26 and 54 is coming in the pattern of 7, 14 and 24. How this 7, 14 and 24? The number are double, starting from 7, then 14, then 24. Yes, so that 5 is the 5 is fitting onto this sequence, right? So 5 is not the wrong term because it is satisfying one pattern for us. Okay, okay. Let's think about something else. I think some students are thinking about 73, but why 73? What is that pattern that you identify? The above three numbers should satisfy some pattern which is not satisfied by 73. Then you will tell me, okay, plus 9. Okay, if you think about plus 9, then it is fine over here. But over here it is plus 20 then. है ना? If अगर आप मुझे बोलते हो कि सर प्लस 9 का पैटर्न है तो फिर उस हिसाब से तो गलत जा रहा है. बिकॉज प्लस 9 है तो फिर नेक्स्ट प्लस 20 आ रहा है. तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? Very good, Vignesh ji, very good. This was the correct pattern that we are looking forward to. If you see very carefully, 10 twos first number जो उसको twos किया and then minus 1. 10 twos 20, minus 1 is 19. If you see the second one, that is 19. 19 twos, that is 38. You are supposed to do the plus. That is nothing but 39. So if this pattern is okay, the next number should be 39 twos it is once we did minus 1, once we did plus 1, so next time we'll do minus 1. And that is something but 78 minus 1 and that must be same as 77. So the correct answer is nothing but 76. This 73 which does not satisfy the pattern. And luckily or unluckily मैंने वो option में ही नहीं लिखा था. But the correct answer is nothing but 73. सबको ये पैटर्न समझा क्या था? बिकॉज दिस इज अ लेवल 1 डिफिकल्टी वेयर द प्रीवियस नंबर के ऊपर दो ऑपरेशन लगा के हम लोग नेक्स्ट नंबर को ढूंढते हैं. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 2 प्लस 1 2 माइनस 1 किया ना. दैट इज वन मोर काइंड ऑफ एन पैटर्न दैट वी आर आइडेंटिफाइंग. What happens is when you are able to solve, अगर आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, then whenever you see a series, आपके दिमाग में ये सारे पैटर्न अगर हो गए ना तो चीजें इजी हो जाएगी. Now you know what kind of a thinking that a question maker might have in their mind. While I am making the question, I have that fixed mindset कि हाँ ये पैटर्न होता है तो उसके ऊपर मैं रैंडमली किसी नंबर से शुरू करूंगा and I'll create one pattern and I'll work on it. तो ऐसे ही कुछ पैटर्न होने वाला है. बट ये 73 किस तरीके से आ रहा है समझ रहा है सबको? The pattern was for multiply by 2 and minus 1, multiply by 2 plus 1. So next कैसे मिलना चाहिए था? Multiply by 2 and minus 1. Okay. 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 Let's see a similar next question. Okay.
ट्राई टू सी दिस नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं अच्छा लग रहा है? Just analyze the numbers. You just have to play with them. Okay, okay. Why 26? Okay, plus 6 pattern. Very good. If you think about it, plus 6 pattern. Very good. What about the other things? If you see, ये जो है 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. अगर आप numbers देखोगे 1, 10, 9, 16, 25, 26, 49. Yes, very good. They are the perfect square. एक 1 square था, उसके एक छोड़ के 3 square, 5 square, 7 square. One more thing that somebody just identify कि सर पहली बार +6 हो रहा है, दूसरी बार +10 हो रहा है. तो according to them, this must be the wrong term. Right? अगर आपने जो पैटर्न सोचा ना, उस हिसाब से 26 could be the one. But can I think it like this as well? Let me just write with another color. I think like this. यहां पर I'll do +9. आंसर क्या आ जाएगा? 19. From this 19, I'll do +9 करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था? +7, 8. +8 करना चाहिए, I think. +8 करने पे हो जाएगा. Okay, if I do +8, I think that looks better. If I do +8, it is 18. Again +8, it becomes 26. I think this one is also one of the way of thinking. If I write it like this, then 16 is a wrong term. If आपने जिस तरीके से सोचा उस हिसाब से 26 was the wrong term, right? But this is which happens in the every sequence problem. It might be possible. देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी सोच गलत है. मैं क्या बोल रहा हूँ? It might be possible inside the same sequence you are able to identify the different pattern. It is always possible. ठीक है. एंड अनलकीली यहां पर दोनों ऑप्शन दे दिए थे 16 और 26. सो यहां पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे कि एक पैटर्न से 16 गलत आ रहा है, दूसरे पैटर्न से 26 गलत आएगा. ठीक है. बट वी हियर आई जस्ट वांट टू ऑब्जर्व वन मोर थिंग कि +8 का भी पैटर्न बन रहा है. राइट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स happens during the examination as well. Apart from that, whenever I am teaching the sequence problem, one thing I always tell to the students, if you are appearing for the examination, sequence के problem ऐसे होते हैं ना, अगर आपसे हो गए तो 2 मिनट में हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो don't waste much time on it. Yes, it could be, Himanshu ji, it could be. There could be a pattern of plus and minus as well. But if you try to see 1, 10, 9, 16, 25, 26, 49. Let me just try to observe कि प्लस माइनस का पैटर्न इस एग्जांपल में क्यों नहीं हो रहा है. इफ आई सी यहां पर कितना हो रहा है? प्लस -1, then it is +7. over here it is nothing but +9 again, then it is +1. over here it is a big number like 23, right? It could be, dear, we are not considering it. We are not considering it as only plus pattern. It could be minus as well. But if you see, यहाँ पर माइनस वाला कुछ भी पैटर्न नहीं दे रहा है. दिस क्वेश्चंस आर सच जहां पे प्लस काम कर रहा है. ठीक है. ऐसा कभी भी नेसेसरी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्लस होना चाहिए. देयर कुड बी अ पैटर्न ऑफ माइनस एज वेल, जो थोड़ी देर में आपको दिखेंगे. राइट. देयर इज अ पैटर्न ऑफ माइनस एज वेल. बट अगर सपोज यहां पर मैं प्लस माइनस का पैटर्न सर्च करने जाऊंगा, व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि यहां पर कोई भी ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है. राइट. Okay. Let's see another question. Try to get me the answer for this. One more thing, Himanshu, I'll repeat. The pattern could be anything. Right? It could be of any kind. You know? Okay. See this question.
Try to get me the pattern out of this. Okay. It is 1, 125, 729, 2177. Can you see the numbers are something special? Yeah, they are the cube of something. So if I write 1, that is nothing but 1 cube. If I write 125, that is nothing but very good. 125 is nothing but 5 cube. If I say 729, that is nothing but 9 cube. And the last is nothing but 2177. There is no such number with cube as this. But do you know ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इसको क्लोज जाता है? Yes. Is there any number whose cube is close to this? No. Even if you can go one step higher, think about 13 cube. Yes, everyone, just let me know what is a 13 cube. Yeah, it should be 219. So this is one of the reason whenever you are preparing for such an examination, आपका काम क्या होता है कि पहले जितने भी आपके पास पॉसिबल हो उतने स्क्वायर और क्यूब्स को याद रख लिया जाए, बिकॉज दोज थिंग माइट बी यूज समवेयर. लेकिन सपोज अगर आपको क्यूब्स पता नहीं है तो यू विल वेस्ट योर 2-3 मिनट्स इन डूइंग दिस, क्यूब निकालना ये निकालना उसके अंदर, right? But the wrong number in the sequence is nothing but 2177. The correct number on its face should be 2197. Okay, let's see the next one. Now again we are coming to the standard type of a question that some numbers has been given. You have to give me the next number, right? But now the difficulty level would be a bit higher, right? So be very careful before answering. The pattern could be anything. So slowly try to think about it. The numbers are 11, 17, 39, 85. You have to give me the next number. Yes, very good. The Riddhi has got the correct answer, but I'll just give one more minute to each student to analyze why the answer 163 is the correct one. Try to think the pattern to get the answer 163 where Riddhi ji has got. It is 11, 17, 39, 85. The next number should be what? I think everyone must have observed at least one thing. From the first to second, it is nothing but the pattern of +6. From second to third, the number is nothing but +22. From second, from third to fourth, the pattern is of +46. Now, how these numbers are coming? Okay, according to Mahek's sake, it is -5, +5, +7, -7. Okay, I didn't got this what Mahek said. महक जो बोलना चाहते हैं. सर हाँ जी.
+6 + 12 प्लस उसके बाद क्या 36 + 48 +6 है और उसके बाद +22, +12 22 होगा ना, बिकॉज नहीं सर 17 से 39 हो रहा है। अच्छा 22 होगा हाँ, +22 का डिफरेंस है। ओके। फिर ओके, महक के हिसाब से उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि 7 2 -5 इज नथिंग बट 17। वेरी गुड। देन 17 2 +5 is nothing but 39. Is it? Yes. Correct. Very good. Then 39 twos are plus 7 is equal to 85. Then according to you, the next number should be 85 twos are minus 7. And that is nothing but 163. Very good, Mahek ji. देखो आपने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट और एक तरीके से आप आंसर ला सकते थे। आई थिंक हिमांशु गॉट 133। व्हाट इज द पैटर्न दैट यू गॉट? बट ओवर हियर दिस इज द करेक्ट आंसर 163 जो महक जी ने निकाला। और एक तरीका क्या है पता? उन्होंने जो पैटर्न निकाला वही पैटर्न आपको यहां पर भी दिख सकता है। इफ यू सी, पहली बार हमने +6 किया, दूसरी बार 22 किया, दूसरी बार उसके बाद हमने 46 किया। सो इफ यू सी, बिटवीन दिस नंबर्स दैट वी हैव रिटन, उनके बीच में एक पैटर्न है। 6 से लेके 22, यानी कि हमने नेक्स्ट टाइम के लिए +16 कर दिया, और उसके बाद हम लोग ने +24 नंबर बढ़ा दिया। एंड इफ यू सी, 16 इज नथिंग बट 8 2s, this is nothing but 8 3s, and the next number should be what? Can you tell me what should be the next number over here? मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? Yes, 8, no, not 20. Yes, it should be 32, right? So it should be 32 because it is 8 4s. यानी कि मुझे पता चला ये 46 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 46 प्लस 32, दैट इज नथिंग बट 8 7 78 ऐड कर दूंगा इसके अंदर। I'll add 78 to it. So what is that number? I think it is going to be again the same thing. Right? तो दो अलग अलग पैटर्न से वी आर गेटिंग द सेम आंसर, बट आई थिंक व्हाट अदर स्टूडेंट्स गॉट, हिमांशु को +10 का पैटर्न नहीं समझा। हिमांशु, हमें +10 कैसे कर रहे हो आप? सर रॉन्ग हो गया वो अच्छा, हाँ, ओके, बट एवरीवन अंडरस्टूड दिस कि ये पैटर्न। ओह वाओ रिद्धि, दैट्स आल्सो लुकिंग कूल। हाँ, रिद्धि जी ने जो किया है वो भी अच्छा लग रहा है। 3 स्क्वायर, वेरी गुड। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस बिकॉज नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर by using 3 different patterns. That is a good observation. And apart from this, I want to share something very personal to me. While I was doing my MSc, I appeared for an interview of TCS. The first round is nothing but the screening round, and in the screening round, they give us a random questions like what we are solving at present. Right? They give you some numbers, they ask you to get the next one, and the question type that you see on your screen is something that was asked to me when I was in my masters. Right? So apart from appearing for the examinations, it also helps you during your interview also, because most of the companies, for their screening round, they just check what is your thought process, right? How you think about the numbers, how you think in the situation. For that, they will give you some kind of a situation, and one of those would be playing with the numbers for sure, because they want you to be comfortable with it, right? So I'm very happy we can see the 3 different patterns to get the same answer. That's very good. Okay, let's see another question of the similar type, but I think this is a bit easy for you all. Just try to see the pattern among these numbers. Yeah, this was easy one, right? This was easy. The next number is going to be 226. Over here we can see it is 1
1 to 10, 37, 101, and the next number is to be found. This difference is of plus 1, difference is of plus 8, difference is of plus 27, the difference is of 64, and the next difference should be what? So it is nothing but 1 cube. This was nothing but 2 cube. This is nothing but the 3 cube. This is 4 cube. The next difference should be of 5 cube. So here it is plus 125. Hence the answer must be 226. Right? The pattern was easy unless you just should know that what are the cubes, nothing else. Right? Okay. That's cool. Is it fine? Everyone okay with this pattern? Okay. Okay. Let's see the next one. Just try to see this number. किसी एक की जो ख्वाहिश थी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, है ना? Someone wanted the pattern of subtraction, right? Yes. The correct answer is going to be 0. How the correct answer is 0? Let us just see here. It is 225, 100, 36, 910. So first you are subtracting 125, then you are subtracting 64, then you are subtracting 27, then you are subtracting 8. So next you should subtract 1 because these are nothing but the sequence of cubes. Okay. 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 Let's see. Now we come again to one difficult type of a problem. Try to see this. It's 2, 12, 36, 80, 150. Think about the numbers, how the pattern must be. The answer must be 252. Let's see how. Let's first think about it. Or those things about it, how the number is coming 252. If you are getting some other answer, you can let me know. Also, you should let me know the pattern as well. Okay. Yes, anyone getting some pattern in this numbers? Just think about it. Just see, whenever you are stuck, if you are not able to get any pattern,
Think about the most easiest possible way that I did, right? That two level of pattern. Just think about it. So if I just want to get off that kind of a thing, what I see is the first difference was of plus 10, the second was plus 24, the next I can see of plus 44, the next that I can see is of plus 70, right? Now I cannot see any pattern among this number 10, 24, 44, and 70. Let me just try to go more deep into them. Now, whatever the number given, is there any pattern between them? So I just go for another level. So I just go one more level down. So what is the pattern over here? The number is getting added by 14. Over here, the number is added. Very good, very good. The Riddhi got some wonderful pattern that I was looking forward to. But if anybody is not able to get it, this is the one way that we can think. Over here is plus 20. The next is nothing but plus 26. Right? रिद्धि जी ने जो निकाला है ना, that is the correct and the perfect way of thinking. अगर आप cubes और square के साथ comfortable हो, then you can get that answer very quickly. Right? That is something that I actually wanted at the end. Right? So one pattern that she gave is correct. And can you see a pattern inside this as well? हमने भी जो अभी लिखा है उसके अंदर भी आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? Right? After this, what you can see, the numbers are 14, 20, 26. यानी कि numbers जो है उनके बीच का difference है plus 6 का. Over here it is plus 6. The next number is nothing but plus 6. So इसके बाद जो भी वो भी plus 6 होने वाला है. यानी कि यहां पर होगा plus 32. यानी कि उसके आगे यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर होगा plus 102. यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है? नेक्स्ट नंबर होने वाला है 252. ठीक है. सो क्या आ रहा है ना, इफ यू आर अनेबल टू गेट एनीथिंग, ट्राई टू गो फॉर दिस. इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट पैटर्न जो रिद्धि जी ने लिया, दैट पैटर्न इज ऑल्सो गुड. दैट पैटर्न इज एक्चुअली वही पैटर्न से ये क्वेश्चन बनाया गया है. राइट? इट इज वन स्क्वायर वन, that is nothing but 2. That is nothing but next is nothing but 2 square, that is 4. 4 plus 8 is nothing but 12. The next is 3 square plus 3 cube. That is nothing but 9 plus 27. That is nothing but 36. 4 square, that is nothing but 16. 4 cube is nothing but 64. And the answer is nothing but 80. The next is nothing but 5 square 25 and 5 cube 125, that is nothing but 150. So the next number should be 6 square, that is 36, plus 6 cube, that is 216. Answer is going to be 252. राइट? क्या होगा ना, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं इसीलिए लगता है कि ये पैटर्न हमारे दिमाग में तो कभी नहीं आएगा. बट सपोज इसके बाद कभी ऐसे ही कोई सिमिलर नंबर्स आपको दिख जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल व्हेन यू सी 2 12 36 80, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ स्क्वायर इन द क्यूब. This is a kind of a thought process which is developed only and only after practicing such questions. Otherwise ये चीजें नहीं होती. ठीक है. तो इनिशियली अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, डोंट गेट वरीड अबाउट इट कि मुझसे नहीं होगा, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा नहीं सोचना. प्रैक्टिस से ही होगा. ठीक है. बट इज दिस बोथ द पैटर्न इज फाइन टू एवरीवन? दोनों पैटर्न सही लग रहा है? Yes, sir. ओके. Let's see this question. I think this is easy one. Very easy. It is 1, 3, 6, 11, 18. I think I can write the next number directly. Nine.
ओके, सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग 52। 52 कैसे बोल रहे हो अनु? आशुतोष जी 52 कैसे? अकॉर्डिंग टू रिद्धि इट इज 29। अकॉर्डिंग टू आशुतोष, अच्छा आशुतोष का आंसर 25 था, ओके, बट 25 कैसे आ रहा है? ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग me it is 29. What is the pattern for 29? And Ashutosh, you can let me know what is the pattern for 25 as well. Yes, yes, I think students can see ये 29 क्यों आ रहा है? Prime numbers, very good. Sorry sir, from my side I am having a net problem, I could not join. Okay, prime numbers, very good. So this is nothing but this is the reason कि we should be comfortable with the prime, इसलिए हमने पहला दिन में बहुत ज़्यादा time उसके ऊपर निकाला था, right? If we can see this, यहाँ पर जो number है 2, 3, 5, 7, these are nothing but the prime numbers. So the next prime number is nothing but 11. Hence the answer must be 29. Okay, yes, correct. Okay, okay, see this question. Very good. If it is 32, 19, 8, what should be the next number? Try to see the pattern. Pattern is up. यहाँ पर देखो -13 हुआ, 32 minus 13 is 19, 19 minus 11 is 8. So 13, 11, next number क्या लेना चाहिए? 13, 11, अगर आप इसको ऑड नंबर सोचते हो तो नेक्स्ट ऑड नंबर -9 होना चाहिए था, बट -9 करने पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है. So 13, 11, the next number should be 7. That is nothing but the next prime number, यानी कि previous prime number. Hence the answer must be 1. Correct. Okay. As you can see over here. Okay. Try to see these numbers. 139, 27, 81. Next number should be what? What? Why 216? Nah. The answer must be 243. Why 216? What about 216? 216 कैसे आ रहा है? 216 के लिए भी अगर कोई वैलिड पैटर्न रहेगा तो वी कैन थिंक अबाउट इट. द पैटर्न इज ऑफ मल्टीप्लाई बाई 3, है ना? एवरी टाइम द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3. 243 इज द करेक्ट आंसर. 3 टेबल नहीं है, 3 मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, बट एवरीवन इज एबल टू सी कि पैटर्न किस हिसाब से हो सकता है. ओके, ओके, सी दिस क्वेश्चन. नाउ इट इज समथिंग डिफरेंट, but I think easy to identify. Okay, the answer is nothing but 108. That is a correct. What is the pattern? 108 is a correct one. Yeah, multiply 3. Okay, yes, correct. So if you see from this side, it is nothing but multiplication by 3 divide. Okay, multiply by 3. If I see the from the first second, I think it is division by 2. If I do half of it, I get this. From second to third, it is division by 3.
From this to this I don't know, from this to this I don't know. Again over here if I see this pattern I could not see. From the next I see it is division by 2, it is division by 3, again division by 2. So the pattern must be of division by 2 and division by 3, right? Correct, perfect. Okay, what Omkar is trying to tell is 3 into 2 is 6. Acha, you are just trying to give me the reverse way. Correct, correct. Omkar is think of, if you are thinking of reverse way, it is like a multiplication. If you think from the right to left, it is nothing but division. Correct. But the correct answer is nothing but 108. That is perfect. Okay. Let's see something different. Okay. Similar pattern we have already seen, but now you will see it is easy to identify those things. Okay, perfect. The correct answer is nothing but 405. Okay, but what is the pattern? Yes, the correct answer is 405. But what is the pattern? Okay, yes, correct. Plus 1 minus 1 pattern. With this we have seen 13 twos are 26 minus 1 is 5. Now, next number is 25 twos are 50 plus 1 is nothing but 51. Similarly, if we keep on going, 51 twos are minus 1 is nothing but 101. 101 twos plus 1 is nothing but 203. So the next number should be 203 twos minus 1, and that is nothing but 405. Right? Correct. Multiply by 2, once we have to add 1, once we have to subtract 1. Right? So that is nothing but the pattern. Okay, that's fine. Let's see the next one. If for anyone, if it is going too fast or slow, please let me know. But this is easy. If you are unable to get, still प्लीज लेट मी नो, है ना? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर 5-6 लोगों ने आंसर दे दिया फिर आप नहीं बोल सकते. यू कैन स्टिल लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन इट. Yes, the correct answer is 191. What is the pattern? Yes, it is multiply and add 2. Multiply by 2 and add 1. Sorry, yes, multiply by 2 and add 1. The correct answer is going to be 191. Perfect. It is multiply by 2 and add 1 pattern. Okay. Correct. So let's see the next one. Okay. Yep. Now this is created by me. Think about it. The plus 5, that means no. त्रिशला जी प्लस 5 इन व्हाट सेंस? प्लस 5 कैसे बोल रहे हो आप? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था मैंने. द करेक्ट आंसर इज 50. अच्छा, आदित्य को लग रहा है कि हाँ 58 होना चाहिए. प्लस 5 कैसे हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है प्लस 5. पहला नंबर क्या हो रहा है? देखो, इफ यू सी फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड इट इज प्लस 4, then it is plus 5, then from here to here I can say it is plus 7, over here it is plus 10,
वो here it is plus 14, right? So next pattern क्या होना चाहिए? Okay, 72 कैसे आ रहा है आप लोगों को? आलिया एंड परेश जी, how you are getting 72 plus 19? 19 क्यों प्लस करूं मैं? Okay, if you are thinking of plus 19, how you are thinking of plus 19 by the way? प्लस 19 तो 19 लाने के लिए पैटर्न क्या है? Okay, yeah. So yes, now this is interesting. Someone got it the right. Says I should go to the next level as well. If you see 1 से लेके 5 प्लस 1 है, यहाँ पर ये प्लस 2 है, यहाँ पर ये प्लस 3 है, यहाँ पर ये प्लस 4 है और यहाँ पर ये प्लस 5 है, राइट? अच्छा, आप ये प्लस 5 बताना चाहते थे, ये मुझे बताना था. ओके, सो इट इज प्लस 5, तो आई शुड ऐड 90, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड, right? If I add this is going to be 70. Is it fine? सबको समझा लेकिन किस तरीके से आया आंसर? Okay, okay, that's fine. Mhm. Okay. Now what we are going to see is some basic type of a problem. We are just going to see again. Now you have to give me the wrong number among this. इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको गलत लग रहा है? Okay. There are some student going for 41, some student going for 77, and some student going for 33 as well. Okay, since the 41 is repeating most, I would like to talk about 41 first. Why 41 is a wrong number according to you? 41 बाकी सारे नंबर का ऐसा कौन सा पैटर्न है जो 41 सेटिस्फाई नहीं कर रहा? Okay, okay, okay. Now all the students started thinking there should be something like this. Okay, okay. If you tell me कि उस हिसाब से ये 43 होना चाहिए, कैन यू सी व्हाट इज द पैटर्न फॉर द, ये तीन नंबर के बीच में पैटर्न क्या है फिर? Okay, it is plus 9. Very good. And over here it is also plus 9. I am impressed. I am totally impressed with this thought process. Right? So it is nothing but plus 10. मतलब उल्टा, उल्टा plus 10 होना चाहिए. I am very much impressed with this. If you think in that sense, the wrong answer is going to be 41. But can you identify any other pattern? I am very, very, very happy by this observation made by the students. राइट, बिकॉज उन्होंने दो सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया, फिर उल्टा एक पैटर्न देख लिया, सीधा पैटर्न देख लिया. दैट इज गुड. कैन यू थिंक अबाउट सम अदर पैटर्न आल्सो हिडन इनसाइड दिस विदाउट डिवाइडिंग द गिवन सीक्वेंस इनटू टू पार्ट? ये पूरा का पूरा सिंगल सीक्वेंस एक ही पैटर्न से बना हुआ है. जस्ट थिंक अबाउट इट. ये कि पूरा का पूरा, अभी आपने क्या किया था ना कि गिवन सीक्वेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लस 9 वाला, एक प्लस 10 उल्टा वाला, राइट? But can you think about the entire sequence is made up of a single pattern? दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं करना. सॉरी, आई थिंक समवन सेड समथिंग. ओके, इट इज प्लस 9 प्लस 10. राबिया जी, अगर आप देखोगे प्लस 9 प्लस 10 काम नहीं करेगा. मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल राबिया जी इज कि आपको क्या करना है, एक से दूसरा नंबर और दूसरे से तीसरा इस तरीके से जाना है. ठीक है, तो पहले से दूसरा किस तरीके से जाओगे आप? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, हाउ विल गो? व्हाट इज द पैटर्न?
फर्स्ट से सेकंड नंबर कैसे आ रहा है? बाय यूजिंग कितना डिफरेंस जा रहा है? नॉट इट इज +9 -9 नहीं है ना विवेक जी. इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, +9 का डिफरेंस नहीं आ रहा है. डिफरेंस कितने का आ रहा है? इट इज -18, right? It is -18. But from the second to third, can you see something? From second to third, what it is? Yeah, it is +27 now. Can you see from third to fourth? यहां पर कितना आ रहा है? The difference is of what? Yeah, it is -35. Okay, let's go from this to this. The difference is of, I think it is +44. Can you see the last number? यहां पर कितने का difference आ रहा है? It is -50. Now from this 5 numbers, if I just circle or I just mark this 3 numbers, ये जो 3 नंबर है उसके अंदर कुछ तो पैटर्न है. ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? दिस नंबर आर स्पेशल. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द पैटर्न? Yes, there comes in 9 tables, so this is nothing but, yes, it is nothing but 9. Okay, I'll just erase it. It is nothing but 9 twos are 9 threes are, and the last one is nothing but 9 6 are. Can you see यहां पर क्या होना चाहिए था? 9 2, 9 fours are yes, it should be 9 4s and 9 5s होना चाहिए था, जो नहीं पैटर्न के हिसाब से. इफ आई सी 9 4s, तो यहां पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? यहां पर डिफरेंस होना चाहिए था 9 4s, यानी कि यहां पर 36 का डिफरेंस होना चाहिए था. अगर 36 का डिफरेंस है तो इस नंबर पे क्या आना चाहिए? What should be there? If it is a difference of 36, the number should be 32, right? And if you see very carefully, next pattern क्या होना चाहिए था? यहां पर 9 5 यानी कि यहां पर होना चाहिए था +45. And if you see 32 +45, नेक्स्ट नंबर दे रहा है आपको, परफेक्टली दे रहा है. हाँ, 32 + 45, 32 45 77. Yes, correct. So what we are seeing, but आई वॉन्ट टेल कि जिन्होंने भी वो 41 को ऑब्जर्व किया था वो लोग गलत नहीं है. उनका भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न बहुत ही अच्छा था. बट अगर एक ही पैटर्न से है, देन दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट? ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस के अंदर 41 दिया ही ना हो, सो दैट मींस दे विल फोर्स यू टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स. सो दिस इज नथिंग बट द अदर वे ऑफ थिंकिंग. यहां पर वी कैन सी प्लस माइनस का पैटर्न, और उसके साथ साथ नंबर्स जो थे वो मल्टीपल टेबल में आ रहे थे. इज इट फाइन? ये क्वेश्चन समझा किस तरीके से आया? We have seen the same question in two different ways. Why? Because अगर suppose 41 option ही नहीं होता तो we have to think something else. Just see the data. ये स्क्रीन को एक बार देखो, क्या है क्वेश्चंस, किस तरीके से हमने किया इसको. If you are okay with it, we can go for the next question. Yes, such a situation also occurs during the examination, है ना? So what you are supposed to do is you are supposed to choose one of the answer. क्या होता है ना, मेजोरिटी एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा बहुत बार हो भी चुका है. क्या होता है ना कि while creating the question, जो क्वेश्चन क्रिएटर होता है ना, उनके दिमाग में एक पैटर्न होता है. बट एक क्या होता है ना, whenever you appear for the examination, there is a window of क्या बोलते हैं हम लोग उसको, we tell it something, I just forgot the name. क्या होता है ना, whenever the answer key is released, they give you the period of 7 days. If you want to challenge, हाँ, that is called as challenge period. During that period, you can challenge any answer key. मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि उन लोग आंसर की में ऐसा लिख देते हैं, आइडिया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. जिन्होंने भी ए और बी में से कुछ भी चूज किया, दे विल गेट द मार्क्स, राइट? तो सच थिंग हैपेंस इन एग्जामिनेशंस एज वेल. इवन बड़े बड़े मतलब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी ऐसा होता है. आई हैव सीन इट, because while analyzing the paper of the previous year, I have found
इवन अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। आंसर कीज के अंदर इवन तीन तीन ऑप्शन करेक्ट मिलते थे अलग अलग पैटर्न से, तो दे यूज टू राइट ए और बी और सी ना, तो ऐसा होता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चूज वन ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग, राइट? Dear Omkar, the way you are telling me most appropriate, when the question is asked, there is no such thing called as a most appropriate. If you see, जब स्टूडेंट ने मुझे 41 बोला ना, दैट पैटर्न वाज नॉट आइडेंटिफाइड बाय मी। मैंने भी उसको सोचा नहीं कि मुझे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। बट इफ यू सी दैट वेरी केयरफुली, दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट बिकॉज वी हैव लर्न दैट थिंग ऑल्सो कि सीक्वेंस को दो पार्ट में डिवाइड करो और पैटर्न आइडेंटिफाई करो। उन्होंने जो सोचा है वो भी तो एक पैटर्न ही है ना, +9 +10 का। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट, यस समटाइम इट इज देयर, बट यहां पर तो दोनों ही काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी ऑफ द पैटर्न, पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर वो पूरा पैटर्न पूरे सीक्वेंस पे लगता है तब दैट इज अप्रोप्रिएट ओनली, है ना। अदरवाइज योर थॉट इज राइट। देर आर सम क्वेश्चंस, मैंने आई थिंक कोई तो एक एग्जामिनेशन में देखा था, व्हाट दे डू, दे गिव यू द क्वेश्चन and then they will only ask you from the given option which is the most appropriate, यानी कि all of the options are right but you have to give the most appropriate, but there are very few examinations which does this, है ना, very few examination, because that is more difficult। जब उन लोग आपको बोलेंगे ना कि सब कुछ सही है लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, तब डिफिकल्ट हो जाता है, but that's fine। Let's see some other questions as well। this is easy, I think it is easy। I think एक क्वेश्चन स्किप हुआ क्या, हाँ ये वाला। Let's see this first। It is 13, 14, 30, 93, 376, 1885। What should be the next? Okay, now after solving this many questions, one thing that I would like to share with the student is, yes, the correct answer is 11316। We will see the pattern। One thing that I would like to share with the student is, whenever you see given sequence के अंदर अगर नंबर थोड़े स्लोली बढ़ रहा है या फिर स्लोली कम हो रहा है, यानी कि प्लस या फिर माइनस का पैटर्न है। लेकिन इफ यू सी नंबर थोड़ा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, यानी कि वहां पर कुछ मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न होने वाला है, तभी जाके नंबर इतना सडनली इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दैट इज अ फ्यू थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व। सो यहां पर यू कैन सी 13 से 14 हुआ, 14 से 30, फिर 30 से सीधा 93 हो रहा है, 30 से सीधा 93। आई थिंक वहां पर ही आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। व्हेन यू सी 30 से लेके 90, कैसे हो सकता है 30 का 90, है ना। 30 यू गॉट 93, सो 30 से 90 लाना इजी था, 3 +3। बट अगर ऐसा ही है तो बाकी सब जगह पे वो चीज ऑब्जर्व होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 14 से 30 भी आना चाहिए, और आई थिंक वो होता भी है, 14 2 +, फिर उसी हिसाब से 13 1 +1, दैट इज नथिंग बट, if I just continue like this, it is 93 4 +4, that is nothing but 376, 376, very good, 5 +5, and that is nothing but 1885, but the required answer is nothing but 1885, 6 +6, and the correct answer is going to be 11316। Okay. Okay, the correct answer is 11316। Everyone okay with this pattern? Okay, okay, okay. Let's see few more questions. Oh, wait, Riddhi has something to extra to say. अच्छा सेम ही पैटर्न था, अच्छा सेम ही था, ओके इट वाज सेम 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 पैटर्न।
Okay, I thought Riddhi has found one more pattern inside it, so that could be more interesting. Let's see, but okay, try to see this numbers. Now you can see the numbers are not increasing very fast. So जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का होगा, सिंस इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस का कुछ पैटर्न है. कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आसान भाषा में अपनी भाषा में हम लोग जो yes, the correct answer is the correct answer is 455 as Riddhi said. Let's see the pattern. Anyone? Pattern किसका आ रहा है? Everyone, please try to see how the answer is coming out to be 455. Think about it. Okay, it is plus. Very good. The first thing that everyone should observe is कि सबसे बड़ा difference किसका था? So plus 6 का difference, plus 18, plus 36, plus 66. What should be the next? That is something to be observed. The next number should be 102. How you are getting that 102? That is to be identified. अब वो 102 तक कैसे पहुंचना है ना? So if we can see यहां पर if I go further to this, यहां पर ये plus 12 हुआ. Over here it is plus okay, it is not 36, it should be 38. So it is plus 20. The next is nothing but plus 28. So it is 12, 20, 28. So I can say it is plus 8 pattern. Plus 8, plus 8. Next should be plus 8 करके मिलेगा. प्लस 8 किया तो ये हो गया प्लस 36. अगर 66 को इतना प्लस कर दिया तो वो हो जाएगा प्लस 102. अगर 102 यहां पर ऐड कर दिया तो आंसर इज गोइंग टू बी 455. Yes, someone has raised the hand. Najmusa. Yes, you want to ask something? No, okay, that's fine. But is the pattern clear to everyone? What we have done, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस निकाला. ऐसे क्या होता है ना, ऐसे करने से हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो थोड़ा हाई हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. इफ यू गो एनीवेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न दिखने ही वाले हैं, है ना. बट वी हैव सीन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, जहां पे हमने देखा पैटर्न कुड बी एनीथिंग. प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस प्राइम नंबर्स हो सकता है, प्लस स्क्वायर हो सकता है, प्लस क्यूब हो सकता है. वन ऑफ द वंडरफुल पैटर्न दैट वी हैव सीन टुडे इज नथिंग बट वन स्क्वायर वन क्यूब वाला वैसा पैटर्न हो सकता है. फिर हमने ऐसे टाइप के प्रॉब्लम देखे जिसके अंदर पैटर्न के अंदर भी बहुत सारे पैटर्न से जिसको आइडेंटिफाई करना होता है, right? So these are the kind of a question that we have seen, but we were basically working on the concept of only numbers, numbers and numbers. But सीक्वेंस के अंदर और एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है अबाउट द अल्फाबेट्स.
they will give you alphabets and then you have to get the pattern in the alphabets. Okay, so before you start solving the problem, what I have seen is whenever a student who has never prepared for this thing will go to attempt this, उस टाइम पे उन लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ही शुरू कर देंगे and then will like कि ये कैसे होना है, कैसे करना है. Those kind of a question will arise. The best way to solve this type of a problem, जब कभी भी आपको अल्फाबेट दिखता है ना, yes, the correct answer is M for sure. Over here, the correct answer is M for sure, I know. What I am trying to tell is whenever you see alphabet type of a problem, always keep a habit of writing all the alphabet with the given number. मुझे पता है कि आपको सबको पता है कि ऑर्डर क्या होता है. हमने सबने स्कूल में यही तरीके से लिखा था, है ना. आई थिंक मैंने भी लिखा था, याद नहीं आ रहा है, बट लिखा था IJKLMNOPQRS. It's not necessary to write in the same pattern. You can write entire thing into a single line as well. But over here, writing like this has a special meaning to me, है ना. वो एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने को और इजी हो जाता है. सो व्हाट आई डू, मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा आपको सबको पता था, बट आपको क्या करना है ना, हर एक के ऊपर एक प्लेस वैल्यू डाल देना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 26, राइट. ऐसा करने का फायदा क्या होगा, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फाबेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द नंबर प्रॉब्लम ओनली. इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, मुझे अगर ये क्वेश्चंस को बनाना है तो मैं क्या लिखता हूं पता है, मैं सिर्फ लिखता हूं 1 4 7 10. फिर नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सिर्फ +3 करके है, राइट. सो इट इज +3, द नेक्स्ट नंबर शुड बी 13. 13 के ऊपर कौन खड़ा है, M खड़ा है, तो M इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो दिस इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड द लेटर प्रॉब्लम्स, है ना. तो जब कभी भी आपको ऐसा लेटर वाला प्रॉब्लम दिखता है, तो आप क्या करना, आप इस तरीके से अल्फाबेट्स जो है उसको नंबर्स के साथ कनेक्ट कर दो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करने पर आपके आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको, ठीक है. बट दिस M was very simple because +3 का पैटर्न था, but try to get the pattern in this. Try to get the pattern in this. You have to give the next two number. The next two number is going to be N and C according to Vidiji. Let's see what about others. Can you tell us the pattern as well? What is the pattern idea? Try to see again same चीज, जब इतना बड़ा है, yes the pattern, the correct pattern is nothing but -3 -4. अगर इतना बड़ा है तो आपको क्या करना है, उसको पैटर्न के हिसाब से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कौन से लेटर एक दूसरे के पास है. Z के बाद W है, T Q, यानी कि अल्टरनेटिव साथ में ले लो, Z W T Q. बाकी क्या है, S O K G. Now if you see inside this, from Z to W कैसे मिला होगा, Z to W यानी कि 3 लेटर पीछे जाओगे, फिर W to T कैसे मिला होगा, तो 3 लेटर और पीछे चले जाओ, T to Q अगेन 3 लेटर और पीछे चलेंगे. अब अगर मुझे Q से नेक्स्ट लेटर चाहिए तो आई हैव टू गो 3 स्टेप्स मोर बैक, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी N, इसलिए N वाले 2 है. उसके बाद S से O कैसे मिल रहा है, एस से ओ, इफ यू, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया इसलिए बोल रहा था कि वो लिखने पे इजी होता है,
है ना. इफ दैट लेटर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ना, वो सारे के सारे लेटर्स रहेंगे ना, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे वो नंबर्स को. सो हियर इट इज नथिंग बट -4 S2O. फिर O2K इज अगेन -4. एंड इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, S के लिए नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर अगर आप देखोगे ना, इट इज 19, 15, 7 एंड 7. है ना, तो आपको ये -7 का पैटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो नेक्स्ट कौन सा होगा ऐसा लेटर जो -4 यानी कि थर्ड प्लेस पे आता है. थर्ड प्लेस पे कौन आता है, सी. हेंस द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट NC. इज इट फाइन, सबको अब ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है किस तरीके से था. जैसे कि यहां पर भी अगर मैं नंबर लिखूंगा ना, तो चीजें इजी हो जाएंगी. ये 26 है. W के लिए नंबरिंग क्या दिया था, 23 दिया था. T के लिए द नंबर वाज 20. Here Q के लिए number was 17. The next number should be obtained by -3. That is nothing but 14. और 14 प्लेस पे कौन आता है, तो N आता है. सबको समझाइए पैटर्न किस तरीके से है. Yes, sir. ओके. ओके. ओके, I'll give you one more question. Just try to get the pattern out of it. Huh? Okay, try to see this. To make it easy, what I can do is I can just write the corresponding digit associated with it. It is 1, B के लिए 2, P के लिए, very good. I think now the students are getting the trick. So इसके लिए 3, फिर 4, and the next Q के लिए it is 17, it is 5, 6 and here R. I think इसके अंदर कुछ सोचना भी नहीं था, ऐसे ही आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट. इट इज PQR तो बाद S होना चाहिए, ABCDEF तो GH होना चाहिए, है ना. यस. थैंक यू. करेक्ट. तो वो बहुत ज्यादा इजी था, बट आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि नंबर्स के साथ कनेक्ट करने, बट इट वाज वेरी इजी. लेट्स सी दिस वन. व्हाट कुड बी द नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिजिट्स दे दिया आपको कि C यानी कि 3, E यानी कि 5, G यानी कि 7, I यानी कि 9. नेक्स्ट नंबर क्या लेना चाहोगे आप. Okay, the option K B, yes, 11 it is and 13. correct. So the option B is correct. Okay, perfect. So now it is easy to identify slowly, slowly. Okay, think about this. Okay. Okay, what we can see over here, there are three things given. So it is P, R, T, V. If I just number them, it is nothing but 16, 18, 20, 22. So next number, next digit should be someone which is at the 24th place. So it should X. So it should start with X. The number was 3, 5, 8 and 12. What is the pattern? Plus 2, plus 3, plus 4. And the next should be plus 5. So it should be 17. ऐसा कौन है जो X और 17 दोनों साथ में हो, तो अकेला एक ही है, right? So we don't have to think about the last one. Then. Correct. And always whenever you go for the examination जहां पर MCQ होता है, जैसे आपको इनफ आंसर मिल जाता है, टिक कर देना, पूरा सॉल्व नहीं करना. दैट इज अ वन थिंग दैट आई हैव सीन इन द स्टूडेंट्स कि उन लोग है ना ऑप्शंस को देखते ही नहीं है. So whenever you appear for anywhere, just read the question and read all the option first, and then start solving the problem. Because most of the time question इतने easy हो जाते हैं ना कि एक आपको चीज मिल गया ना, उधर से आप टिक कर सकते हो, but still आपने जब ऑप्शन देखे ही नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि फिर पूरा सॉल्यूशन करने जाते हो, you are waste your time. The most important thing in examination is how you waste your time, how you utilize it. More better ways to say how you utilize it, and at the same time how you are wasting it, how you should not waste it, right? Okay,
Let's see this one. I think this is easy. Yep, correct. Yes, everyone can identify this pattern very easily. Neo. This was easy. Option B. Okay. Let's see this one now. Okay, as I said, be very careful and just think about it. Question read करने के बाद option भी एक बार देख लिया करो and just get it very quickly now. Option C should be correct because आपको सिर्फ वो V को आइडेंटिफाई करना था. एक ही जगह पे V है तो आगे कुछ सोचो ही मत, है ना? बिकॉज एक ही जगह पे V है तो काम खत्म हो गया. STUV V होना चाहिए था तो V एक ही जगह पर है. Okay, think about this question. If it is not visible, I can zoom it over here. PKC, SPF, XSK, AXN. Now it is better. Okay, it is E. Okay, I think students are getting two different answers. Then we have to discuss it. EGR, someone is getting A as well. Let's try to see the pattern. Let's try to see the pattern over here. I have to unzoom it. Okay, let me just get the pen. Okay, let's see. The number is, the first is nothing but PSXA dash I. If I see, if I give it as a corresponding number क्या था इसका 16, 19, then after that it was 24, then it was A का value 1 है, यहाँ पर कुछ पता नहीं है और I का value है 9. If I see the pattern पर कितना हो रहा है +3 +5 and after 24 वहां पे उन्होंने 1 लिखा है, बट 24 के बाद 1 किस तरीके से हो सकता है? कैन एनीबडी गेस? 24 के बाद x के बाद y z और a, यानी कि इट इज एक्चुअली नथिंग बट +3, है ना? इट इज x y z a, तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट +3, राइट? नाउ बीच का पैटर्न हमें पता नहीं है क्या होना चाहिए. सो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट नंबर इज ओवर हियर. यहां पर भी हमें कुछ नहीं पता है, बट अगर ये 5 आ रहा है, सॉरी 3 है, 5 है, 3 है, नेक्स्ट नंबर क्या ले सकता हूं? कैन यू सी यहां कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है. कैन यू गेस व्हाट शुड बी दिस? इट शुड बी +5 +3, राइट? इट शुड बी +5 +3. सो यहां पर कौन सा होगा ऐसा नंबर जो 6 प्लेस पे है? 6 प्लेस पे एंड फ्रॉम द ऑप्शन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता. तो मुझे अब सिर्फ सेकंड प्लेस को आइडेंटिफाई करना है. गो फॉर K P S X dash and F. What I'll do is I'll just bring my laptop charger. तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे. Okay, now it is fine. I am back. Okay, it should be FCS. Okay, according to Omkar, it should be FCS. What is the pattern? I think yes. Let's see. Let me just write the pattern over here again. So the K was at the place of 11. It is nothing but P. P is nothing but at place of 16. I think the pattern is of plus. Okay, yes, correct. It is +5, then +3, then +5, then it should be +3. And हमें पता है कि +3 पे A आने वाला है. So the correct option is nothing but this and not this. Right? So FAS is nothing but the correct answer. राइट? सो यू कैन सी वेरी बेसिकली जब कभी भी उन्होंने लेटर वाले प्रॉब्लम दिए हैं, बेसिकली उन लोग नंबर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं. ठीक है? ओके, लेट्स सी दिस वन.
Yes, it is Uij according to Riddhi. Let us just see the pattern. Okay, if I see G, C, Y dash Q. So G, the numbering is nothing but 7, 3, 25, and the last Q was should be at the place of 17. So here I can see nothing but -4 from 3 to 25. So I can write it like this. I can write 25y, right? So it is Y, Z, A, B, C. So from A, B, C, if I want to from C, this is nothing but 3, this is nothing but 20. You can see there is a difference of 1, 3, and 4. So it is nothing but again -4. If you see from this to this number, there is a difference of -8. So there should be a pattern of -8, -8. So if I go from Y to 4 place back, it should be 21 on the 21th place. So to start with U, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, right? From UIJ and UVV दोनों में से एक आंसर होने वाला है. And for the second one, I think T से लेके Y, that is nothing but +5, again +5, again +5. यहाँ पर इसका प्लेस 4 है, +5 किया तो 9th आएगा. On the 9th place I होता है, right? So UIJ would be the correct answer. It is -4, +5, and -6 pattern, right? Everyone is able to see how we are playing with the digits, but given in the letters, but still we are working on digits only. Yes, is it fine? समझा यहाँ पर पैटर्न क्या था? Because I think बीच में मैंने ब्रेक ले लिया ना, तो लोग पता नहीं कहाँ से. Yes, 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 I'll do it again. आदित्य, thank you. Okay, first of all, आदित्य ये U कैसे आया वो समझा? How we got this U? नहीं सर. Okay, okay, let's see that then. फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य जी, सबसे पहला है ना वो जो नंबरिंग वाला फंडा है ना, वो आपको एक समझना पड़ेगा कि नंबरिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कि एवरी लेटर इज एसोसिएटेड दैट नंबर, दैट थिंग इज फाइन. फॉर दिस एग्जांपल आई थिंक आई कैन राइट इट अगेन. इफ इट इज ए बी सी डी, the last is y. Okay, what I see is from G to C. If I see G to C, क्या हो रहा है कि नंबर मैं कितना पीछे जा रहा हूं, 1 2 3 4. I can observe it is -4, right? From C to Y, let's see, C to Y, 1 2 3 4, again I am going -4, right? And if you see from Y to Q कैसे जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे टोटल डिफरेंस -8 का हो जा रहा है. तो अगर पैटर्न बनाना है, आगे दो -4 थे तो पीछे भी क्या होना चाहिए, वो भी दो -4 होने चाहिए. सो इट शुड बी -4 -4. -4 का मतलब क्या बोल रहा है कि 4 पीछे जाना है फ्रॉम Y, right? So from Y if you go 4 back, 1 2 3 4, over here it should be U, and you can verify U से भी अगर 4 पीछे जाओगे तो आपको Q मिलेगा, right? So ये U कैसा है समझ रहा है? यस सर. ओके, नाउ वी गॉट टू नो U आ रहा है, यानी कि B और D में से एक चॉइस होना चाहिए था. अब हम लोग सेकेंड लेटर का जो पैटर्न है उसको देखते हैं. सेकेंड लेटर क्या थे, T Y D, ये पता नहीं है क्या होगा, और फिर N है. नाउ T से Y, अगर आप हम लोग यहाँ पे देखें ना, T से Y क्या जा रहा है, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, कितना जा रहा है, फ्रॉम T टू Y आई कैन सी 1 2 3 4 ऑन द 5th प्लेस. सो यहां से मैंने +5 का जंप करूंगा तब जाके पहुंचूंगा. फ्रॉम Y टू D, इफ आई वांट टू सी फ्रॉम Y टू D, Y के बाद Z 1
2 3 4 5 यानी कि +5 अगेन आ गया। नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, तो नेक्स्ट भी +5 का पैटर्न आने वाला है। अगर डी से मैंने +5 किया, सो इट इज 1 2 3 4 5 यानी कि आई इज दैट नंबर। और इस चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे कि आई के बाद एन बी जो है वो +5 करने से मिलता है। इट इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो इट शुड स्टार्ट विथ यू, द सेकेंड लेटर मस्ट बी आई, जो एक ही जगह पे है, दैट इज नथिंग बट बी, राइट? हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you, sir. Okay, done. So I think these are the type of a question that could be asked. I think I do have one more question. Just try to solve this question. This would be the last question for the session, and after that I'll give you the attendance sheet and the link for the test. Okay, but this is the last question. Try to solve this question. Yes, everyone, please try to see whether the answer is OIZ or not. And one thing that I observe is, if you see all the given options, इफ यू सी ऑल द गिवन ऑप्शन, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर बीच में वाई है, राइट? अगर ये करेक्ट है ना, तो मुझे सिर्फ क्या सोचना है, मुझे सिर्फ ये सोचना है कि सेकेंड लेटर्स जो है उनका पैटर्न क्या है। सिर्फ जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर द सेकेंड लेटर, है ना? अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर दिया तो हो जाएगा। इफ यू सी टी, दैट इज नथिंग बट 20, फिर यहां पर आ रहा है 3, ये आ रहा है 6, और एच इज नथिंग बट एट द 8th place, right? So can you see any pattern in this? Here it is +3, over here it is +2. From T2, next number should be what? And here it should be what? Total difference कितने का आ रहा है? Total difference कितने का आ रहा है? From T to C अगर आप जाओगे, T U V W X Y Z A B और फिर आता है C, तो अगर आप देखोगे कितने का डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So total it is 9. Can you see what it must be? अगर total 9 है तो यहाँ पर +5 होना चाहिए और यहाँ पर +4 होना चाहिए। So T से लेके +5 यानी कि something should get the 25th place, 25th place पे Y होता है। And if I know अगर मिडल में Y है तो ऐसा एक ही ऑप्शन पे मिडल में Y है, right? So hence the correct answer should be option A, because एक ही जगह थी जहां पे मिडल में Y था। Okay, so this is about the concept and the problem based on sequence of numbers as well as letters. Okay, so I think we can end this session over here, मतलब teaching session over here. सेशन आपका कब खत्म होगा? आफ्टर हाफ एन आवर, जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे। ठीक है, so I'll be giving you the link